What just around the corner tech are you eager to get your hands on? Oh, that's a really good. Like basically the question says that ki what is exactly the piece of technology that you really wanted to use? Okay. AR, or AR, artificial, sorry, augmented reality. Okay, what is exactly augmented reality? Augmented reality, yeah, basically is that artificial, no, augmented reality. Augmented reality यानी क्या होता है, जो AR ग्लास होते हैं ना, like basically like AR Vision Pro. Like it's a kind of like a something you probably seen this thing. Like there is a guy who is actually wear this kind of like a big glasses in front of eyes, and it's a kind of like a something really like when you wear that particular AR handset, you actually seen kind of like a something really very different world and things, and that I haven't really tried AR stuff. Okay, augmented reality, I haven't really tried this thing, but yeah, I am really kind of like a curious about that particular stuff, and I really wanted to try it. Okay, yeah. Quantum computing, yeah. Quantum computing is also kind of like a something really very interesting fact. What is actually the quantum computing? So quantum computing is like basically the information that we have, like basically digital information. We actually use digital information is a binary code. Binary code is kind of like a zero and one combination. What is a zero and one combination? It's a language of machine. Okay, so zero and one. Okay, so what is that is zero and one? Okay, so I'm gonna explain this thing with a very proper example. All right, so if I say that ki, do you like ice cream? Okay, so what kind of like a answer do I have? Okay, like I say yes or no, right? Yeah, like if I say yes, I say no. Like अगर मैं कहता हूँ कि I like the ice cream, तो I will get the ice cream. If I didn't really like the ice cream, I didn't really get the ice cream. All right, simple thing. Okay, machine is also kind of like a learning from this way. Okay, yes or no. But as a human, we are not kind of like a something like yes or no. Like just an example is that अभी like a winter चालू है, like it's a kind of like a something like winter, and someone is actually handed over ice cream. Okay, and say that ki, do you want ice cream? Then what kind of like answer do you have? You say no. Like basically your decision is actually relative. Relative means क्या होता है कि it's not stagnant. Like your decision actually change according to the season, according to the mood, according to the whatever it is. Okay, अगर ठंडी का मौसम है तो मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, गर्मी का मौसम है तो मैं आइसक्रीम खाऊंगा. ओके, so basically is this thing, do I like the ice cream or not, is actually depend on the certain situation. Okay, अभी ये मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, एंड दिस इज काइंड ऑफ लाइक अ थिंग्स दैट आई कुड अंडरस्टैंड. ओके, बट मशीन ये नहीं समझ पाती. लाइक मशीन इज एक्चुअली सेज दैट कि इफ आई लाइक द आइसक्रीम, देन यू शुड सपोज टू से यस ऑल द टाइम. या तुझे यस ही कहना है, नो नहीं कहना है. यस यस यस. इफ आई से नो, then basically system will disturb because of that, ki system have information about the this guy like ice cream. So basically is this thing the कंप्यूटर के डिसीजंस होते हैं वो काफ़ी स्टैगनेंट होते हैं, लाइक यस और नो, यस और नो. लाइक कंप्यूटर के डिसीजन इज़ नॉट एक्चुअली इन बिटवीन. लाइक जिस तरह से हमारे डिसीजन होते हैं कि डू आई लाइक आइसक्रीम, आई लाइक आइसक्रीम और नॉट, मे बी काइंड ऑफ लाइक डिपेंड ऑन सम सर्टन सिचुएशन, बट मशीन ये नहीं समझ पाती. क्वांटम कंप्यूटिंग का मतलब यही होता है कि एज अ कंप्यूटर कैन डिसाइड थिंग्स इन बिटवीन ज़ीरो एंड वन. वो समझ पाता है कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है. So this is kind of like a something really say a quantum computing. A quantum computing can understand between the plus, minus, zero, one, right, wrong, and it is really really essential. Why do we need a quantum computing? Like basically we have kind of like a something really a fastest computer in the world. Okay, like basically computer
आज के ज़माने में कंप्यूटर कैन डू एनीथिंग. Okay, so why do we need a quantum computing? Quantum computing is kind of like a something really next level of computing. Okay, like basically हमें लगता है कि like basically as a normal people we do use computer for normal stuff. Okay, इंटरनेट ब्राउज कर दिया, या कोई वीडियो देख लिया, या कोई फिल्म देख ली, या काइंड ऑफ लाइक समझ लो कुछ काम कर दिया कुछ सॉफ्टवेयर में, किसी लाइक एडिटिंग whatever it is. Okay, but this is kind of like a things when you use your computer in a यूनी वे इन पर्सनल वे, यानी एक ही इंसान उस कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहा है. what if I say there is a millions and billions of people are using computer at single period of time, then could you possible, ये पॉसिबल हो सकता है, हाँ ये पॉसिबल है. लाइक राइट नाउ वी आर यूजली यूजिंग यूट्यूब. एट दिस मोमेंट देयर आर बिलियंस ऑफ पीपल आर यूजिंग यूट्यूब. लाइक बेसिकली अगर मिस्टर बीस्ट कोई वीडियो अपलोड कर देते हैं तो विद इन अ मिनट मिलियंस ऑफ लोग देख लेते हैं. as also billions of people are watching YouTube every single second. How does things is actually happened? It's not actually happened by the quantum computing, because quantum computing is at this moment in 2024 it's kind of like a something really in development. Okay, like we don't really reach that particular level that कि हाँ हमने quantum computing बना दिया है. Quantum computing can determine the space, determine the what is the dark matter क्या होता है. what is the dark matter? Dark matter यानी is just like that ना कि like right now, like I'm going through little bit of science stuff. Okay, so space में चांद, तारे, प्लैनेट, सन, स्टार सब कुछ है. ओके, बट देर इज़, ये सारी चीज़ें एक जगह है और उसे कहते हैं हम स्पेस, जहाँ पे कुछ नहीं है. वी से वैक्यूम, बट इट्स नॉट लाइक बेसिकली स्पेस इज़ काइंड ऑफ लाइक अ समथिंग रियली लाइक इट्स नॉट मेंट टू बी नथिंग. लाइक वहाँ पे कुछ हो नहीं सकता, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए. दैट्स वाई the suns and star and everything is literally far away. Okay, like basically कुछ स्टार की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ स्टार की ग्रेविटी बहुत कम होती है. लाइक वाई डू वी हैव मास एंड वेट, हमें क्यों फील होता है, ग्रेविटी किस तरह से एक्ट होती है. लाइक दोज आर द थिंग्स आर काइंड ऑफ लाइक सम सॉर्ट ऑफ अनआंसर्ड. ओके, space is kind of like a, space shouldn't supposed to be a nothing. Space is kind of like a thing that we didn't really explore, and that is called dark matter or dark energy. Dark matter का मतलब होता है this kind of like a things that we don't really understand. Matter का मतलब होता है कि kind of like a something really that we don't really understand has a some sort of substance, we call that matter. So for that particular study we really required a kind of like a quantum computing. Okay, but still, okay, still it's a kind of like that ना कि अभी भी like maybe I didn't really knew about the proper knowledge about the quantum computing, but if that could be happen, and it will definitely happen, क्योंकि अभी तो AR भी आ गया है, सॉरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI भी आ गया है. ओके, सो I don't really think that कि like a in maybe kind of like a 10 or 20 years we will be invented, like we will use quantum computing in our daily life, and definitely the way that we use the computer will definitely change. Okay, yeah. So yes, quantum computing will be kind of like a things will happen. It will change the entire kind of like the way that we work and way that we used to see the world. Yeah, it could be things, lot of things will happen. Yeah, then mm, then 5G technology. Yeah, 5G is actually exists right now. Yeah, like basically everyone has a 5G. Okay, some of the country has even more higher than that, but 5G everyone has a 5G. India has a 5G, US, Japan, like basically हर country में है. Like I'm not counting such countries that like हाँ, for that some particular country they don't really have this kind of like a privilege, but yeah, some of the countries have 5G technology. What is really the 5G technology?
5G technology means like that it's a bandwidth that key, like how much data that we transfer from our mobile, our data, our computer to network tower, and what is the speed. Okay, so first of all there is a GPRS. Okay, GPRS means kind of like a something really a 1G. Okay, like I did use GPRS plan, like basically when I have that Nokia 2690. At that time I usually usually kind of like apply this GPRS plan, and at that time it was kind of like something really very cheap. Okay, GPRS plan. Then 2G. Okay, 2G, then 3G, then 4G. Right now we are at 5G. Okay, so like basically like just an example is that GPRS में कितनी स्पीड होती है 1 KB 2 KB 3 KB या 4 KB, मैक्स टू मैक्स 10 KB तक. ओके, 2G की स्पीड आती है करीब 50 KB टू 100 KB. ओके, 3G की स्पीड आती है ऑलमोस्ट लाइक 900 और काइंड ऑफ लाइक समथिंगली 500 700 KB टू 1 MB और 1.5 MB. ओके, 4G की स्पीड आती है almost like 20 MB to 25 something MB. Okay, it's actually relatable according to the religion, according to the where you are actually accessing. And 5G की स्पीड आती है almost like 300 megabytes to 500 megabytes. Okay, or sometime close to the 1 GB. So that is called 5G. So then after that 5G, can it be will 6G? Well, 6G, I'm not really sure about the 6G and I haven't really heard about that stuff. But 5G is kind of like had enough. Like the way that we use internet and way that we things do on internet, 5G can capable to do anything on the internet. Like basically पहले 2 GPRS 1G 2G या 3G में हम सॉरी 2G तक तो हम यू वीडियो को एक्सेस ही नहीं कर पाते थे. 3G के वक्त जल व्हेन द 3G केम देन वी आर एक्चुअली स्टार्टेड एक्सेसिंग यूट्यूब एंड थिंग्स लाइक दैट. सो या 5G का मतलब होता है कि हम एक तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग कर सकते हैं, क्लाउड गेमिंग कर सकते हैं. क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि we are actually remote. Okay, and we are actually accessing computer from kind of like a something really in very long way. Like basically is this thing कि हम मोबाइल फ़ोन से कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, विदाउट लाइक गो टू द ऑफिस एंड ओपन द डेस्कटॉप एंड थिंग्स लाइक दैट. नो, घर पे बैठ कर ही आप कंप्यूटर से इस्तेमाल कर सकते हैं. यस, क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब भी सेम होता है कि बेसिकली इज दिस थिंग कि यू आर एक्चुअली not playing games on your device, you are actually playing games on cloud. So like basically game playing games on cloud is kind of like something very tricky क्योंकि you don't you really require kind of like a fps का मतलब होता है फ्रेम पर सेकेंड्स. तो एक सेकंड में आप कितने फ्रेम्स जनरेट कर पा रहे हो ऑन क्लाउड. बेसिकली द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर गेम इज a 60 fps and 60 fps at 1080p. Those are the kind of like a HD high definition. It's like a cloud gaming है, अभी भी है, but still it's not flourish yet. Okay, but it will be yeah. So 5G technology, yes, definitely those are kind of like a things. But I haven't really used that because I didn't really have a 5G smartphone. My sister has a 5G smartphone and she's kind of like she has a very high data speed. Okay, biotechnology and gene editing. Well, this is a kind of like a stuff that I usually seen this thing on movies. Okay, so what is exactly the biotechnology and gene editing? Gene editing का मतलब होता है कि like basically the entire the human, like basically मैं किस तरह का इंसान हूँ. like मुझे मुझे स्वीट खाना अच्छा लगता है या तीखा खाना अच्छा लगता है. what is exactly the color of my hair, what is exactly the skin tone of my color, what is exactly the my nature and everything. like basically let me tell you one thing ना, जब हम पैदा होते हैं like basically the entire information regarding about me
is actually stored in one place. I'm not talking about Facebook. I'm talking about DNA. Okay, DNA में, like basically it's a, like you actually seen this thing, okay, in somewhere. DNA has every information regarding about that particular human, that what kind of like a human he will be. Okay, like he will be मतलब ये नहीं कि उसकी पूरी जिंदगी लिखी होती है, no. It's kind of like a something like that कि what kind of skills that he has. That kid is a kind of like a smart, that kid is a kind of like a something really dumb, or that kid kind of like a something really extraordinary. Like basically na, just an example कि विराट कोहली kind of like a something really a very good cricket player है. Okay, why does he became a, one of the biggest cricket player in the world? Why is that कि he do lot of practice and things like that. अगर मैं विराट कोहली जैसी उतनी प्रैक्टिस करूँगा तो क्या मैं विराट कोहली जैसा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड बन पाऊँगा? नहीं. वाई? बिकॉज ऑफ दैट कि वी नीड सम सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ लाइक अ थिंग्स दैट कि हमें ये क्यों बनना है, लाइक वाई वी चोज फॉर दिस पर्टिकुलर पैशन. ओके, लाइक शाहरुख खान इस दुनिया में एक ही है, बट एक्टर बहुत सारे हैं, बट शाहरुख खान एक ही है. ओके, लाइक इट्स अ काइंड ऑफ लाइक अ थिंग्स दैट ना कि हम एक सोचते हैं हमें क्या बनना है, एंड दैट इज़ काइंड ऑफ लाइक अ समथिंग रियली दैट कि हमें उसे करने में मज़ा आता है डूड. ओके, it's kind of like a something in between, like how should I supposed to say that ki I wanted to become this, and how, like why do I wanted to become like this. It's just like I don't know, I just love doing it, that I just love doing acting, so that's why I became the actor, that's why I became the superstar, that's why I became the Shah Rukh Khan वगैरह वगैरह. Okay, so like basically is this thing ki what kind of like a people am I, those are the information is actually stored in our DNA. ओके, एंड DNA कैसे पैदा होता है, लाइक बेसिकली व्हाट इज द DNA इज एक्चुअली हैपन इज दैट कि व्हेन एक्चुअली स्पर्म और काइंड ऑफ लाइक समथिंग रियली दैट स्पर्म में बहुत सारे स्पर्म, लाइक आई एम नॉट एक्चुअली से दैट द स्पर्म इज एक्चुअली इजैकुलेटिंग, एंड वो स्पर्म, हाँ वही स्पर्म है, बट उसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं. दे एक्चुअली हैव काइंड ऑफ लाइक इंफॉर्मेशन अबाउट द मेल. ओके, लाइक उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग अबाउट द मेल, द फादर, एज ऑल्सो द प्रीवियस जनरेशन, एवरीथिंग. ओके, देन वो एक तरह से एम्ब्रियो में जाता है. एम्ब्रियो इज एक्चुअली फीमेल एम्ब्रियो, एंड फीमेल एम्ब्रियो और फीटस में जाता है, सॉरी फीटस में जाता है, एंड फीटस काइंड ऑफ लाइक अ सॉरी एग में जाता है. लाइक आई एम नॉट रियली प्रॉपरली अंडरस्टैंड अबाउट द रिप्रोडक्टिव थिंग, आई नो लिटिल बिट ऑफ थिंग्स अबाउट दैट, बट यूजुअली इज दिस थिंग कि जब एक तरह से एक फीटस पैदा होता है, फीटस मतलब क्या होता है ना, एक छोटा सा बेबी. ओके, जिसके एक तरह से लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें DNA बनता है कि व्हाट काइंड ऑफ लाइक अ पर्सन ही विल बी. ओके, उसमें कौन सी क्वालिटीज़ रहेगी, क्या होगा, ये होगा, वो होगा. ओके, एंड दोज आर द थिंग्स आर एक्चुअली हैपन्ड नेचुरली. ये चीज़ें नेचुरली हो जाती है. जीन एडिटिंग का मतलब ये होता है कि हमारे पास वो पावर आ जाएगी जिससे हम एक तरह से चीज़ों को लाइक बेसिकली हम DNA में चेंजेस कर सकते हैं रिगार्डिंग अबाउट दैट कि अगर मैं कोई बच्चा पैदा करना चाहता हूँ तो मैं किस तरह से बच्चा पैदा करूँगा. ओके, लाइक दैट पर्सन कुड बी काइंड ऑफ लाइक अ स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट और वट एवर इट इज़. ओके, तो अब लाइक अब तक ये सारी चीज़ें नेचुरली होती आ रही थी, but when this biotechnology and gene editing will happen, then kind of like that कि हम वो इंसान पैदा कर सकेंगे जो हम चाहते हैं. लाइक इफ़ आई वांट सोल्जर, तो हम जीन एडिटिंग के माध्यम से हम उस बच्चे में उस तरह की क्वालिटी डाल सकेंगे जिससे वो आगे जाके एक सोल्जर बनेगा. इट्स अ काइंड ऑफ लाइक अ समथिंग रियली काइंड ऑफ लाइक अ आर्टिफिशियल बेबी. ओके, लाइक जिस तरह से हम नेचुरल बेबी होते हैं, जिस तरह से हमें जीन्स को एक तरह से नेचुरल सिलेक्शन से हम प्रोसेस से गुजरते हैं, जीन एडिटिंग का मतलब शायद यही होता है, शायद. लाइक आई डिड से शायद. ओके, लाइक आई हर्ड अबाउट दैट पर्टिकुलर टर्म, but I'm not really sure about this particular thing. Okay, might be the everything that I say regarding about the quantum computing, regarding about the 5G technology and regarding about everything
these are the things might be I thought that कि this is kind of like a stuff gene editing. Yeah, मैंने बस सुना है कहीं, तो I'm not really sure about this thing, but probably almost like a 70% or 60% that I might true. 70-60% that gene editing would be kind of like this. Okay, yeah. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये तो हो चुका है या लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है कि मशीन समझ सके, लाइक मशीन कैन अंडरस्टैंड द थॉट एंड एवरीथिंग. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग. ओके, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग क्या होता है? सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि जिस तरह से हम सोचते हैं, मशीन वो सोच नहीं पाती. ओके, but actually machine can collect the information and they can actually preserve, like they can, like just an example. ओके, चलो मान लेते हैं कि दो इंसान है, सॉरी एक इंसान है, एक मशीन है. ओके, इफ आई से कि खाना बनाओ. ओके, लाइक आई जस्ट गिव कमांड टू द ह्यूमन एंड मशीन. ओके, तो कौन सबसे अच्छा खाना बनाएगा? ओके, तो यू कुड प्रोबेबली से इंसान नहीं, मशीन बनाएगा. वाई? बिकॉज दैट कि ये जो मशीन है, उस मशीन के पास पावर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है कि उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, मतलब लाइक बेसिकली फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इंसान ने जिस तरह से खाना बनाया है, उन खानों की, उन सारे खाने, लाइक उन सारे लाइक पकवानों की पूरी इंफॉर्मेशन उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास है. ओके, और उसे ये भी पता है कि किस तरह से पकाना है, बिकॉज ऑफ दैट कि ही नोज एवरीथिंग, बिकॉज ऑफ दैट कि उसके पास पूरा डेटा है, पूरा डेटा है. तो वो एक तरह से परफेक्ट खाना बनाएगा. ओके, लाइक बेसिकली अगर कोई पॉपुलर शेफ है जिसने एक तरह से एक ज़बरदस्त डिश बनाई, वो एग्जैक्टली वही डिश बना के रखेगा आपके सामने. एंड प्रॉबली दैट मशीन कैन मेक अ रियली गुड डिश. ओके, वो बहुत ज़बरदस्त खाना बनाएगा एज कम्पेयर टू काइंड ऑफ लाइक अ ह्यूमन. ओके, ये होता है काइंड ऑफ लाइक अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो सोच सकता है. बट एक्चुअली इज दिस थिंग कि वो क्रिएट नहीं कर पाता है. लाइक व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएट नहीं कर पाता है? सो इफ आई से दिस थिंग कि लाइक बेसिकली इज दिस थिंग कि कौन, लाइक मे बी आई थॉट दैट कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है कि वो इंफॉर्मेशन को, लाइक बेसिकली द एवरी इंटेलिजेंस दैट ही हैज़ इज एक्चुअली फ्रॉम द डेटाबेस दैट ही हैव. ओके, लाइक अगर उसके पास डेटा नहीं है तो वो क्रिएट नहीं कर पाता है. उसके लिए इंटरनेट का एक्सेस होना बहुत ज़रूरी है. ओके, लाइक बेसिकली दिस थिंग कि अगर खाना बनाओ, लाइक इफ़ आई गिव दिस ऑर्डर टू द ह्यूमन एंड मशीन विदाउट इंटरनेट, तो वो मशीन काम ही नहीं करेगी. ओके, बट इंसान काम करेगा. वाई? बिकॉज ऑफ दैट कि हमें काम करने के लिए किसी इंटरनेट की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती. If we want to do this thing, we can do this thing. Okay, so that's kind of like a something really a flaws. Okay, अगर like basically if I say that कि कुछ ऐसा काम करना है जो काफ़ी ऐसा है कि किसी ने नहीं किया है. ओके, लाइक किसी ने नहीं किया, काइंड ऑफ लाइक समथिंग रिलेटेड दैट कि चलो लाइक जस्ट इमेजिन दैट कि डांस. ओके, तो मान लेते हैं कि लाइक अ डांस इज़ नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट. ओके, बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता इस दुनिया में. डांस नाम का कोई शब्द नहीं है, डांस नाम की कोई टेक्निक नहीं है, डांस है ही नहीं, जस्ट लाइक इट डजंट एग्जिस्ट. ओके, एंड बेसिकली दिस थिंग कि मैंने एक मशीन को कहा और एक इंसान को कहा. ओके, सो इफ़ आई से मशीन, लाइक बेसिकली इंसान को कहा कि जस्ट डू अ डांस, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा व्हाट इज रियली डांस. देन आई टीच हिम दैट कि हाँ ऐसा ऐसा डांस है. ओके, सो बेसिकली इज दिस थिंग कि मैं इंसान को सिखा सकता हूँ कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली दैट यू शुड सपोज टू बी डू डांस. ओके, मशीन भी उस प्रोसेस को सीखने की कोशिश करेगी. ओके, बट वो प्रोसेस नहीं कर पाएगा. वाई? बिकॉज ऑफ दैट, लाइक मे बी इट जस्ट लाइक माई थॉट प्रोसेस माइट बी दिस थिंग कि हम मशीन से ज़्यादा जल्दी सीख लेते हैं. मशीन इतनी जल्दी नहीं सीखता.
What do you mean by that? It's a kind of like a things that कि I'm gonna say ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है. ओके, हाउ डू आई नो अबाउट दिस थिंग इज दैट कि आई डोंट नो, आई दिस काइंड ऑफ लाइक समथिंग नेचुरल प्रोसेस. ओके, तो ये मेरे लिए रिमेंबर करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है. अगर मैं लेफ्ट हैंड को राइट पोजीशन पे लेके जाता हूँ और राइट हैंड को लेफ्ट पोजीशन पे लेके जाता हूँ, जिससे एक स्टेप बनता है. ओके, ये मैंने सीख लिया. बट मशीन ये नहीं सीख पाती. मशीन को पता ही नहीं कि उसके कौन सा हाथ लेफ्ट है, कौन सा हाथ राइट है. ओके, एंड इफ़ आई से कि लेफ्ट हैंड राइट पोजीशन पे लेके जाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मशीन के पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसका कौन सा हाथ लेफ्ट है या कौन सा हाथ राइट है. ओके, अभी उसके पास तो कोई डेटा है ही नहीं ना, डांस इज़ नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट. तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है उसके लिए. सो बेसिकली ही वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि उसका हाथ कौन सा है. ही वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज रियली द हैंड. एंड बेसिकली ही वाज बिटरली कंफ्यूज एंड ही वोंट बी एबल टू डू दैट स्टफ. ओके, बट इंसान काफ़ी चीज़ों से समझ सकता है. बट मे बी दिस काइंड ऑफ लाइक समथिंग रियली अ वन वे ऑफ थॉट प्रोसेस, बिकॉज लाइक अभी तो जिस तरह से मशीन लर्निंग हो पा रही है ना, जिस तरह से मशीन सीखती है रिगार्डिंग अबाउट थिंग्स एंड दैट, so probably this could probably solve. Yeah, but yeah, artificial intelligence is exists right now. Yeah, in 2024 years, and it's kind of like a change the entire world. It changed the entire thing, by the way. Yeah, it's definitely clean energy technology. Yes, is actually, yeah, clean energy technology we are actually starting using. Yes, like right now we have EVs, electric vehicles. Okay, and every countries are actually pushing EVs to the customer. and and as also within a couple of years, okay, most of the countries are actually set target that they don't really kind of like they don't really depend on their fossil fuel, so they just wanted to shift to the EV. एक kind of like a future technology है and clean energy source है, उससे कोई भी pollution नहीं होता. And yeah, but clean energy is not meant to be kind of like that कि clean energy, क्योंकि हम EVs चलाते हैं तो EVs का मतलब ये नहीं कि ये क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करता है या क्लीन एनर्जी पे सस्टेन या क्लीन एनर्जी पे रिलाई करता है. नो, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए भी एक तरह से फैक्ट्री में उसके पार्ट्स बनते हैं और फैक्ट्री को चलाने के लिए कोयला जलता है और कोयले से पोल्यूशन होता है. सो ऑब्वियसली EV इज़ नॉट एक्चुअली प्रैक्टिकली अ क्लीन एनर्जी. बट या वी विल शिफ्टेड, हम धीरे धीरे उस चीज़ को ओवरकम करेंगे रिगार्डिंग अबाउट व्हाट शुड वी सपोज टू. एंड प्रॉबली इन द फ्यूचर सारे फैक्ट्रीज आगे जाके भी एक तरह से क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी पे चलेंगे. सो या दिस कुड बी अ हैपन. या देन yeah, so those are the things that I think that ki I just wanted to know. I just want to know more about those stuff. As also is this thing ki this is the my thought process. This is sorry, this is about this is actually my thought regarding about some of the stuff that I explained regarding about 5G and this and that. Might be this is not completely right, or might be this not completely wrong. I'm not really sure. Okay, yeah, if but probably yeah, kind of like a 60-40% that I might write. All right, yeah. So this is it, and thank you.